सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने इवेंट्स डिस्कस किए थे उसमें से नाउ आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप तो हो गया हम लोगों का इवेंट। नाउ उसके बाद इफ यू सी नेक्स्ट जो आएगा हम लोगों का वो ऑन एरर आएगा। एंड जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोग नोट करके रखना। बहुत सिंपल है। ऑन एरर यहाँ पे देखो क्या बोला है, एन एम्बेडेड पेज ऑन दिस सेज द इमेज कुड नॉट बी लोडेड, दैट्स एन एरर। सो जब अगर एक एरर आएगा वो टाइम पे आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, दैट इज ऑन एरर इवेंट। बस यही है। सो यहाँ पे देखो जब हम लोगों ने कोई एक इमेज ऐड करने का ट्राई किया है और वो इमेज ऐड नहीं हो रहा है वेब पेज पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, इमेज टैग सोर्स डाला है वो इमेज का। एंड ऑन एरर हम लोगों ने ऑन एरर ये आपका जो इमेज टैग है उसके अंदर हम लोगों ने एट्रीब्यूट कॉल किया। ऑन एरर दैट्स एन एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लोगों का वो इवेंट भी है। और ये जो इवेंट है उसके आगे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ फंक्शन कॉल किया, और जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन लिखा है उसमें हम लोगों ने क्या दिया है, ऑन एरर हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक अलर्ट मैसेज दिया है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। दिस इज कॉल्ड एज ऑन एरर इवेंट। बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल। ठीक है, ऑन एरर नोट कर लेना, छोटा सा ही कोड है, जल्दी से लिख लो। मैंने ये जो सेम प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं उसका वापस लिंक मैंने डाल दिया है W3 स्कूल्स का। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ही आपको ये सेम जो हम लोग अलग अलग इवेंट्स पढ़ रहे हैं वो सिलेक्टेड इवेंट्स यहाँ से करने हैं, और अलग से जो हम लोग प्रोग्राम्स देख रहे हैं वो प्रोग्राम्स आपको याद रखना है, बिकॉज MCQ सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। आई होप हो गया। इज इट डन? नोट करके हो गया प्रोग्राम? अरे ये सुनो, सोए है क्या सब लोग? हेलो गाइस। यस सर। नेक्स्ट इवेंट पे जाते हैं अभी। नेक्स्ट जो हम लोग का इवेंट है, तीन इवेंट्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, फोकस, फोकस इन, फोकस आउट। कैसे वर्क करेंगे? फोकस मतलब यहाँ पे ये मैं फोकस लेके आया टेक्स्ट बॉक्स पे जहाँ पे मुझे कुछ एंटर करना है। सो देखो नॉर्मली जो टेक्स्ट बॉक्स था वो हम लोगों का वाइट कलर का था। जैसे हम लोग यहाँ पे फोकस लेके आए उसका जो कलर है वो चेंज हो गया, जिससे हम लोग को पता चलेगा एग्जैक्टली हम लोग कौन से टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय फोकस। सो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, एंटर योर नेम, इनपुट टाइप। हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा, टाइप टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया। एंड ऑन फोकस हम लोगों ने इवेंट कॉल किया है और उसमें आपने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डिफाइन कर दिया है। ऑन फोकस दिस का मतलब क्या होगा, जब आपका फोकस ये करंटली जो इनपुट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर आएगा वो टाइम पे ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, दिस फंक्शन बेसिकली डिफाइंस दी करंटली अगर आपका ये वाला टेक्स्ट बॉक्स अगर आता है तो ही ये काम करेगा, तो ही ये ट्रिगर होगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सो और उसके बाद में यहाँ पे देखो हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड माई फंक्शन, और उसके आगे आपने क्या लिखा, एक्स डॉट स्टाइल, बैकग्राउंड उसका येलो कर दो, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। सो ये आपका ऑन फोकस आ गया इवेंट, ऑन फोकस इवेंट। ठीक है, नोट करते जाना कौन से इवेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और कौन से हम लोग स्किप कर रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स है, सारे हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये ड्यूरेशन चेंज, एंडेड, ये वाले हम लोगों ने नहीं किए हैं। हम लोगों ने ड्रैग ओवर, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये वाला इवेंट किया है हम लोगों ने। ठीक है, फोकस वाला किया। अब फोकस इन देखेंगे तो फोकस इन वापस पहले वाला जो अभी हम लोगों ने प्रोग्राम देखा वैसा ही सिमिलर है थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोगों ने फोकस इन यहाँ पे अगर मैं बाहर फोकस अगर लेके जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अ इनपुट फील्ड गेट्स फोकस्ड अ फंक्शन इज ट्रिगर्ड व्हेन चेंज द बैकग्राउंड। ठीक है, लेकिन फोकस आउट में क्या हो रहा है वो देखते हैं। क्या लिखा है देखो, व्हेन यू लीव द इनपुट फील्ड अ फंक्शन इज ट्रिगर्ड विच ट्रांसफॉर्म्स द टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट इनटू अपर केस। सो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ तो लिखा है,
ठीक है। अब जब मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, फोकस बाहर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये जो इनपुट टैग है, टेक्स्ट है आपके, वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। सो दैट इज फोकस आउट। मतलब आप टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ देंगे, जब यहाँ से फोकस अगर आप और कहीं पे शिफ्ट करेंगे, वो टाइम पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसके जो टेक्स्ट है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपने लोअर केस में लिखा है, अगर अपर में लिखा है तो वो अपर में ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फोकस इन में भी क्या हो रहा है, हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करें तो ऑन फोकस या फोकस इन, ऑन फोकस इन दोनों सेम वे में ही काम कर रहा है। दोनों का एग्जैक्टली कोड भी अगर आप देखेंगे तो सेम है, दोनों का थियरी भी ऑलमोस्ट सेम आएगा, ठीक है। तो ये दो इवेंट्स जो है, ऑन फोकस एंड ऑन फोकस इन, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑन फोकस मैं वही बता रहा हूँ कि ओके ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है। ऑन फोकस इन मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब मैं लिख रहा हूँ वो टाइम पे ये फोकस एक्टिव हो रहा है हम लोगों का। सो ऑलमोस्ट वो दोनों सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फोकस आउट में क्या होगा, आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ भी एंटर किया, अब फोकस इन है, फिलहाल मैं ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ही हूँ, उस पर क्लिक किया हुआ, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक्टिव है, वो इंसर्ट फील्ड उसका एक्टिव है। तो क्या होगा, जब अभी मैं ये टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ दूंगा और मेरा माउस पॉइंटर को मैं और कहीं पे लेके आऊंगा, दैट इज व्हाट वी मीन बाय फोकस आउट। तो ऑन फोकस आउट, यहाँ पे देखो ऑन फोकस आउट हम लोग जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और वो फंक्शन क्या बता रहा है, हम लोगों ने एक वेरिएबल क्लिक किया, वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज विद द नेम एक्स, और वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एफ नेम, एफ नेम दैट इज द आईडी ऑफ योर इनपुट फील्ड। आपका जो इनपुट फील्ड है उसका आईडी हम लोगों ने एफ नेम दिया है, दैट इज फर्स्ट नेम। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एफ नेम डॉट वैल्यू, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है उसके लिए हम लोगों ने टू अपर केस नाम का फंक्शन कॉल किया। जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन है ये। तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर का जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब जो भी कुछ आपने एंटर किया है दैट इज द वैल्यू, वो सारा वैल्यू जो है वो टू अपर केस फंक्शन के थ्रू, विच इज एन इनबिल्ट फंक्शन ऑफ अ जावास्क्रिप्ट, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। सो आई होप ये वाला जो पार्ट है वो आपको समझ में आया। ऑन फोकस आउट, गिव द टाइटल ऑन फोकस आउट एंड नोट डाउन दिस प्रोग्राम एवरीवन। सो इफ वी आर डन विद दिस प्रोग्राम, विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट इवेंट। तो तीन हम लोगों के इवेंट्स हो गए, फोकस, फोकस इन, फोकस आउट, और तीनों का आपको जो थियरी है वो यहाँ पे मिल जाएगा। देन फुल स्क्रीन चेंज एंड फुल स्क्रीन एरर, एज नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, गो टू फुल स्क्रीन मोड। सो जब अगर हम लोग यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड पे जा रहे हैं, ये देखो आपका जो ब्राउजर है वो फुल स्क्रीन मोड पे गया, बराबर है, क्लोज फुल स्क्रीन, ये कंप्लीट हो गया। सो बस यही है। आप अगर कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें अगर फुल स्क्रीन मोड पे जा रहे हैं, एक्चुअली ये हम लोग को काम का नहीं है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, हर एक ब्राउज़र के लिए आपको थोड़ा सा अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो लेट इट बी, अगर ज़रूरत रहेगा कभी हम लोग देखेंगे। आई जस्ट सी कौन से हम लोगों के इवेंट्स बाकी है जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ये वाला है हम लोगों का, की डाउन, की प्रेस, की अप, ये तीन करने हैं। सो ऊपर जो हम लोगों ने फोकस इन, फोकस आउट देखा, उसके बाद में की डाउन, की प्रेस, की अप, ये वाला इवेंट देखना है। देख लो जल्दी से क्या होगा, ऑन की डाउन फंक्शन कॉल होगा, बराबर है। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने डाउन की, आपका डाउन एरो का की प्रेस किया, यहाँ पे क्या है, यू प्रेस्ड अ की इनसाइड द इनपुट फील्ड, बस ये इतना सही है। सो छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा इवेंट है। पैराग्राफ डाला है, दैट इज अ हेडिंग, इनपुट टैग डाला है, और वो इनपुट टैग में इनपुट टेक्स्ट बॉक्स डाला है, और वो जो इनपुट टैग है हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें हम लोगों ने ऑन की डाउन इवेंट कॉल किया है, जहाँ पे हम लोगों ने माई फंक्शन कॉल किया है, और माई फंक्शन में एक अलर्ट बॉक्स डाल दिया है, नथिंग मोर देन दिस। ये ऑन की डाउन हो गया। देन की प्रेस, अगेन सिमिलर वे में ही काम कर रहा है, ऑन की प्रेस। सो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, कोई एक की मैं प्रेस करूँगा, कोई भी की, कोई कीबोर्ड पे कोई भी की अगर मैं कोई भी बटन दबाऊंगा तो ये वाला जो इनपुट टेक्स्ट है वो आएगा, ठीक है। सो आपको ABCD का कोई एक बटन भी दबाएंगे तो भी ये वाला जो की है वो आएगा। सो इसमें भी हम लोगों ने वही किया है, खाली कोड आपका ऑलमोस्ट सेम है,
सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या किया, ऑन की प्रेस, फंक्शन कॉल किया और वो फंक्शन में अलर्ट डायलॉग बॉक्स डाला हुआ है, दैट इज ऑन की प्रेस। देन की अप एग्जैक्टली सिमिलर वे में ही काम करेगा। क्या लिखा है देखो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट, जो इनपुट टैग है हम लोगों का उसमें हम लोगों ने लिखा है एंटर टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, आईडी हम लोगों ने एफ नेम दिया हुआ है, ऑन किया माई फंक्शन कॉल किया है और वो माई फंक्शन क्या बताएगा, जो भी हम लोग लिखेंगे वो सब, सपोज यहाँ पे ये मैंने लिखा, ये देखो जो भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एक प्रीवियस प्रोग्राम हम लोगों ने देखा ऑन फोकस आउट, वही सेम फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने वापस लिखा हुआ है, रीयूज किया हुआ है, बस यहाँ पे ऑन फोकस आउट के जगह पे ऑन की अप लिखा हुआ है हम लोगों ने। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे ये लिख के, सो उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ऑन की अप। सो अगेन दैट्स अनदर पार्ट, लोड, ऑन लोड इवेंट। तो जब भी आपका पेज लोड होगा वो टाइम पे ये जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो कॉल होता है, इवेंट कॉल होता है, देखो पेज लोडिंग के ऊपर कॉल होता है। और जब भी मैं ओके करूंगा तो ये पेज जो है वो आपका आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, बॉडी में ये सबसे अलग वाला टैग है ऑन लोड इवेंट, बॉडी के अंदर हम लोग कॉल करते हैं, मतलब आपका HTML पेज का, वेब पेज का जब बॉडी लोड होगा वो टाइम पे ऑन लोड इवेंट कॉल होगा। सो जस्ट नोट कर लेना ये ऑन लोड इवेंट इन जावास्क्रिप्ट एंड ये कोड लिख दो। क्या लिखा है हम लोगों ने, बॉडी के अंदर ऑन लोड, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया और वो फंक्शन के अंदर सिर्फ हम लोगों ने एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड किया है। इतना सा ही प्रोग्राम है, नोट कर लो जल्दी से। यस सर। ओके, सो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। सो दैट इज ऑन लोड इवेंट, पेज लोड होने पे आता है, ऑन लोड डेटा, ऑन लोडेड डेटा इवेंट, दैट इज आवर इवेंट्स नेम, ऑन लोडेड डेटा इवेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे ये देखो ये आपका डेटा कुछ तो यहाँ पे लोड हो रहा है और वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज प्रोवाइड करेंगे या जावास्क्रिप्ट तब कॉल होगा, मतलब ये जावास्क्रिप्ट का इवेंट कॉल हुआ। क्या बताया, ब्राउजर हैज लोडेड द करंट फ्रेम, तो आपने एक फ्रेम जो ऐड किया है दैट इज दिस वीडियो, दिस इज आवर डेटा। सो यहाँ पे तो ये वीडियो ऐड करने का जो कोड है वो एग्जैक्टली सेम है। वीडियो कैसे ऐड करते हैं हम सबको पता है, हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में भी। वीडियो वाला टैग कॉल करेंगे हम लोग, देन कंट्रोल्स और उसके अंदर हम लोगों ने लिखा ऑन लोडेड डेटा और वहाँ पे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया और आपका जो वीडियो है वो वीडियो का यहाँ पे आपने लिंक प्रोवाइड कर दिया। सोर्स के अंदर हम लोग वीडियो का नाम लिख देंगे एंड टाइप में आपका वीडियो जो है वो MP4 है या कौन सा है वो लिख देंगे, दैट्स इट। और उसके बाद फिर पैराग्राफ टैग के अंदर तो ये जो सिंपल सा नीचे आपको ये जो वीडियो कर्टसी नाम दिख रहा है वो तो सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए डाला है। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में अलर्ट में हम लोगों ने आपका जो अलर्ट बॉक्स है वो ऐड किया है। तो इन शॉर्ट क्या होगा, जब कभी आपके ब्राउजर के ऊपर डेटा लोड होगा, वीडियो लोड होने का मतलब भी यही होता है कि डेटा लोड हुआ, तो वो टाइम पे जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन कॉल होगा। सो दैट इज ऑन लोडेड डेटा इवेंट, ऑन लोडेड डेटा इवेंट, दिस इज अनदर इवेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये अभी मैं लिखा नहीं रहा हूँ। देन उसके आगे अगर आप देखेंगे माउस डाउन ये आएगा, ऑन लोड मेटा डेटा, ये अभी हम लोगों को काम का नहीं है, वो नहीं करेंगे हम लोग, वो स्किप कर रहा हूं मैं, याद रखना। ऑन लोडेड डेटा, देन उसके आगे मैसेज वाला पार्ट आएगा, मैसेज इवेंट आएगा। सो क्या बोला यहाँ पे, सॉरी माउस वाला आएगा, मैसेज वाला नहीं माउस वाला आएगा, ठीक है। सो देखो कौन से किए हम लोगों ने, नोट करके रखना ये पेज में से जो जो इवेंट्स आपको पढ़ने हैं वो, ठीक है। की प्रेस, की डाउन, की अप ये किया हम लोगों ने, देन लोड वाला एंड लोडेड डेटा, और उसके बाद फिर अभी माउस डाउन माउस एंटर ये वाला करेंगे हम लोग। सो देखो यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया हुआ है, एक पैराग्राफ टैग डाला है बड़ा सा और उसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, ऑन माउस डाउन हम लोगों ने माउस डाउन, ऑन माउस अप हम लोगों ने माउस अप इवेंट कॉल किया है, ठीक है। सो ये दो इवेंट्स हम लोगों ने कॉल किया और उसके लिए दो फंक्शंस लिखे। सो यहाँ पे देखो अगर मैं माउस अप करता हूँ तो हम लोगों को क्या आ रहा है, यहाँ पे
ग्रीन टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑन माउस अप ग्रीन टेक्स्ट आएगा, ऑन माउस डाउन रेड टेक्स्ट आएगा, मतलब टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। वही हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया है। तो पैराग्राफ में आपने जो भी कुछ लिखा है दैट डजेंट मैटर, आप कुछ भी लिख सकते हो। सिर्फ हम लोगों को याद क्या रखना है, यहाँ पे पैराग्राफ आपका जो टैग है पी टैग है उसके अंदर हम लोगों ने दो इवेंट्स कॉल किए हैं, ऑन माउस अप एंड ऑन माउस डाउन। और वहाँ पे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के दो फंक्शन कॉल किए हैं माउस अप एंड माउस डाउन के लिए। और वो जो दो फंक्शंस है वो दोनों में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आपका पैराग्राफ टैग का जो आईडी है दैट इज माई पैराग्राफ माई पी वो कॉल किया और उसका स्टाइल डॉट कलर रेड और ग्रीन किया है। बस इतना ही किया है। तो जब आपका माउस अप या माउस डाउन होगा, ठीक है, वो टाइम पे आपका जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो आप ट्राई करना ये। ओके, सो माउस अप एंड माउस डाउन, these are the two events. Then mouse move, mouse over, mouse out and mouse up. ये देखते हैं माउस एंटर। सो माउस एंटर में क्या बोला है, माउस पॉइंटर जब कभी अगर मूव होगा वो टाइम पे यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये माउस पॉइंटर जब भी कभी मूव हो रहा है तो आपका ये जो इमेज है ये बड़ा हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, माउस एंटर। माउस एंटर पे अगर हम लोगों ने एक कोई इमेज ऐड किया हुआ है यहाँ पे, एंड ऑन माउस लीव हम लोग नॉर्मल इमेज बता रहे हैं। तो यहाँ पे दो इमेजेस है, देखो आपको एक बिग इमेज है एक नॉर्मल इमेज है। तो जब आपका ऑन माउस एंटर होगा वो टाइम पे ये देखो इमेज टैग है, यहाँ पे इमेज टैग के अंदर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कौन सा इवेंट कॉल किया है, ऑन माउस एंटर हम लोग बिग इमेज बता रहे हैं, एंड ऑन माउस लीव नॉर्मल इमेज बता रहे हैं। बॉर्डर वो तो आपका 0 ही है, फिलहाल के लिए हम लोगों ने कुछ बॉर्डर नहीं दिया है। सोर्स स्माइली वाला GIF डाला हुआ है हम लोगों ने, और ऑल्ट में हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, स्माइली। ठीक है, मतलब ये जो भी टेक्स्ट है वो ऐसे ही आपका इमेज का नाम दिखेगा अगर माउस हम लोग होल्ड करके रखते हैं। विड्थ एंड हाइट स्टार्टिंग में 32 दिया है। दो पैराग्राफ टैग डाले सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, ये नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑन माउस एंटर बिग इमेज एंड नॉर्मल इमेज जो है ये दो फंक्शंस है आपके जावास्क्रिप्ट के। तो बिग इमेज में हम लोगों ने खाली आपका जो इमेज है उसका हाइट एंड विड्थ 32 से 64 कर दिया है, एंड नॉर्मल इमेज में वापस आपका जो इमेज है उसका हाइट एंड विड्थ 32 कर दिया है। सो जब मैं माउस एंटर होगा तो ये जो इमेज है इसका हाइट एंड विड्थ चेंज होके 64 हो गया, एंड जब मैंने माउस हटा दिया तो इसका अगेन हाइट एंड विड्थ जो है वो कितना हो गया, 32 पिक्सल हो गया, नॉर्मल इमेज वाला। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो ये बहुत सिंपल सा दो फंक्शंस ही सिर्फ आपको याद रखना है, उसको छोड़ के और कुछ भी नया नहीं है इसमें। ओनली दिस टू फंक्शंस, जहाँ पे हम लोगों ने दो फंक्शन कॉल किया है, ऑन माउस एंटर बिग इमेज, ऑन माउस लीव नॉर्मल इमेज। तो दो हम लोगों के यहाँ पे फंक्शंस भी हो गए। ठीक है, कौन से दो फंक्शंस हो गए, नॉर्मल इमेज वाला दो इवेंट्स हो गए, सॉरी दो इवेंट्स हो गए, ऑन माउस लिव इवेंट एंड ऑन माउस एंटर इवेंट। तो ये माउस के आपके दो इवेंट्स हो गए। आफ्टर दिस वी हैव माउस लिव। तो माउस लिव ऑन माउस लिव अभी हम लोगों ने देखा था, वो सेम प्रोग्राम आपका आएगा, बराबर है। तो दो इवेंट्स आपके यहाँ पे ही हो गए, माउस एंटर एंड माउस लिव, दोनों का सेम ही प्रोग्राम आएगा, दोनों सेम ही इवेंट है। सो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। माउस वाले सारे इवेंट्स हम लोगों को करने हैं, याद रखो, माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लिव, माउस मूव। अब माउस मूव वाला जो इवेंट है वो देख लेते हैं। सो ये रेक्टेंगल है, इसके ऊपर माउस मूव होगा तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। ये नॉर्मली सारे इसमें होता है। आप देखो कि हम लोग पेंट या कुछ भी ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स आते हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग नहीं बता रहे, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, उससे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। सो देखो ऊपर हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पे डिव टैग यूज किया है, तो उसमें हाइट एंड विड्थ हम लोगों ने दिया है। ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है आउटपुट में उसका हाइट एंड विड्थ है 100/200, और जो बॉर्डर उसका दिख रहा है वो आएगा 1 पिक्सल का। तो ये स्टाइल टैग कंप्लीट हो गया। हेड सेक्शन में ये CSS कोड डाला है हम लोगों ने, CSS कोड है। उसके बाद में हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट हुआ। बॉडी टैग में हम लोगों ने एक डिवीजन बनाया, उसके अंदर ऑन माउस मूव, वहां पे हम लोगों ने माई फंक्शन कॉल किया, एंड ऑन माउस आउट
क्लियर कोऑर्डिनेट फंक्शन कॉल किया। मतलब अगर मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं नीचे आपको, देखो ये कोऑर्डिनेट्स विजिबल है, लेकिन जैसे ही माउस ये रेक्टेंगल के बाहर जाएगा तो आप क्या कॉल कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन, ऑन माउस आउट आप कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्लियर कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिखना बंद हो जाएगा। बाकी के ये जो दो पैराग्राफ टैग है वो तो खाली ऐसी इंफॉर्मेशन बता रहा है। देन यहाँ पे देखो हम लोगों का पैराग्राफ टैग जहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, मतलब जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, उसका आईडी क्या है, डेमो है। देन हम लोगों का माई फंक्शन है जो कोऑर्डिनेट बता रहा है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है, दो वेरिएबल बनाए एक्स एंड वाई, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, ई डॉट क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई, और उसके आगे यहाँ पे आगे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स कॉल किया है। तो आपके जो जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैच हो जाएंगे। याद रखो क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई ये आपका कोऑर्डिनेट्स कैच करने में हेल्प कर रहा है। सो बस ये दो ही आपके लाइंस है, इसमें अभी कुछ डिटेल नहीं है समझने का, सिर्फ हम लोगों ने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जब भी अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बताते हैं, देखो यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिखते हैं कोऑर्डिनेट के आगे, तो वन इज एक्स एक्सिस वन इज वाई एक्सिस। तो पहले जो दिखता है वो एक्स रहता है, 93 अभी जो दिख रहा है वो एक्स है, और 49 जो दिख रहा है वो वाई है। सो हम लोगों ने क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई, और वो कैच करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ई वाला जो आपका बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल ऐड किया हुआ है वो है आपका, और इसका जो भी वैल्यू आ रहा है वो एक्स एंड वाई में जा रहा है, और उसको हम लोग एक क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स कोलन, यहाँ पे देखो इसके थ्रू हम लोग उसको डिस्प्ले कर रहे हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल का वैल्यू, और बाजू में यहाँ पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये कोऑर्डिनेट डिस्प्ले कहाँ पे होंगे, आउटपुट में। तो जिसका आईडी डेमो है वहां पे ये कोऑर्डिनेट वाला वेरिएबल अपना वैल्यू डिस्प्ले करेगा, देखो COOR दैट इज अ कोऑर्डिनेट वेरिएबल, ये अपना आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ये वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले कहाँ पे होगा, जिसका आईडी डेमो है। पैराग्राफ टैग मेरा है एक जिसका आईडी डेमो है, तो उसके अंदर ये आउटपुट दिखेगा। क्लियर कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डबल कोट्स हम लोगों ने डाल दिया, मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिखना बंद हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो माउस है उसके वापस अलग अलग इवेंट्स देखे। ओके ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वापस ज्वाइन करते। सो लेक्चर एंड करने के पहले हम लोग ये माउस ओवर वाला इवेंट देख रहे थे। आई होप बहुत सिंपल सा इवेंट है, आपको समझा रहेगा। किसी को कोई डाउट है देन लेट मी नो। Anyone, any doubts? Yes, guys. Anyone, any doubts? Say yes or no. Any doubts? Hello. No. नेक्स्ट इवेंट पे जाते हैं, माउस ओवर माउस आउट माउस अप। ठीक है, तो माउस ओवर एज वी नो, यहाँ पे माउस ओवर पे क्या होगा, सेम स्माइली वाला माउस ओवर पे इमेज जो है वो बड़ा हो जाएगा। माउस ओवर एंड माउस आउट, नॉर्मल इमेज एंड बिग इमेज जो अभी हम लोगों ने देखा था वो सेम है। माउस आउट भी हम लोग को पता है, माउस अप। तो माउस अप पे क्या होगा, जब कभी आपके कुछ टेक्स्ट है वो माउस अप पे यहाँ पे उसमें कुछ तो चेंजेस होगा, माउस अप एंड माउस डाउन। तो माउस अप एंड माउस डाउन ये वाला भी हम लोगों ने देख लिया। तो माउस रिलेटेड जो भी इवेंट्स है वो सारे हम लोगों के हो गए। अब इसके आगे हम लोगों को और कुछ ज़्यादा इवेंट्स जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक का हम लोग करेंगे। ठीक है, सो ये आपके सारे इवेंट्स हो गए, इतने इवेंट्स आपको करने हैं। सो माउस अप माउस आउट माउस ओवर, ये माउस के सारे जो इवेंट्स हैं। उसके आगे हम लोगों ने स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ जो जो इवेंट्स हम लोगों ने किए हैं, ऊपर वाले कौन से किए हैं वो आप देख लो, प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने देखे हैं। और उसके आगे यहाँ पे माउस अप तक के इवेंट्स सारे आपको करने हैं। इसमें से जो हम लोगों ने नहीं किए वो आप स्किप करना, बाकी के सारे इवेंट्स आपको करने हैं। ठीक है, सो विद दिस पार्ट आपका जो यूनिट 4 है वो यूनिट 4 कंप्लीट होता है। एंड एज आई सेड यूनिट 4 का मैं कोई नोट्स नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो वेबसाइट से हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं, और यहाँ पे ही आपको थियरी मिलेगा और यही आपको याद रखना है। तो यहाँ से ही आपको W3 स्कूल से ही ये वाला लिंक से ही आपको पूरा पढ़ना है। अभी आप इसको कहीं एक अपना वर्ड MS वर्ड में या कहीं पे कॉपी कर लो, ये नोट्स जो भी आपके काम के हैं, आई डोंट माइंड, आपको वो उतना करना है। ठीक है, सो वी आर डन विद यूनिट टिल यूनिट 4 हम लोगों का सिलेबस हो गया आज के जो इवेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए उसके साथ में। एंड नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद यूनिट 5। सो बिफोर वी स्टार्ट विद यूनिट 5, एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू 4 यूनिट्स, फर्स्ट 4 यूनिट्स जो हम लोगों ने किए?
नाउ यूनिट 5 जो है हम लोगों का, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट वर्डप्रेस। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट एक बार स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। सो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस दिस, करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है आपके, होस्टिंग सर्विसेज क्या रहते हैं, टाइप्स ऑफ होस्टिंग क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। और उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे वर्डप्रेस, दैट इज़ आवर टॉपिक। सो आज के लिए हम लोग ये जो वर्डप्रेस वाला जो टॉपिक है ये वाला करने वाला है। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ, ध्यान से वो वीडियो देखना एक बार, आपको बेसिक समझेगा। उसके बाद फिर हम लोग अगेन सर्टन और चीज़ें डिस्कस करेंगे। Tutorial, you're going to learn how to set up this website that looks great on all devices in under 1 hour. And you don't need any technical skills to do this. I'll walk you through every single step, including how to get your own domain name and how to secure your site against hackers. So that's what's coming up. Let's get straight into it. To actually build our website, we are going to be using a website builder called WordPress. And in this video, I want to explain briefly why we're going to be using WordPress before we jump in to the actual steps. And I also want to explain why we're going to be using WordPress over other options out there like Wix, Weebly, Squarespace, etc. You might have seen some of these other website builders out there. Well, I think the most important reason to use WordPress is because it is the most popular website builder or content management system, as it's also known. So 29% of the web uses WordPress. Like, this is insane. From hobby blogs to biggest sites to the biggest news sites online. So you can see some of them here: Vogue magazine, Bloomberg, Beyonce, Jay-Z. Like, a lot of people use WordPress. So it is by far and away the most popular option. Now, Wix, Weebly, Squarespace, even combined, all of them are less than 1% of the websites out there. So if you're picking a platform to learn and to understand, I think it's much more valuable to learn WordPress because there's much more demand in terms of businesses and clients for people with WordPress skills. And personally, I think that's a great reason to learn how to use WordPress. Now, another great thing about WordPress is that it's open source software. So nobody actually owns WordPress. It's actually free software. Now, in order to get our site up with our own domain, we do have to pay for hosting. So it's not like it's free to have a branded WordPress site. But what is interesting and what I like about this open source software aspect is that they can never just raise the prices on you. On Wix, for example, you're kind of bought into their whole platform. If they raise the prices, well, then you can't really just easily move your site somewhere else. On WordPress, if your hosting company, which is who you pay to keep the site up, if they actually increase their prices, well, then you can just move to another hosting company. So I really like that aspect that it's open source, and it gives me a sense of security. If I'm investing time building a site, that I know that for the long term, it's always going to be there, and they're never going to increase the prices without me having an option to switch. So I really like that about WordPress as well. Now, the final thing about WordPress, which I think is a great reason to use it, is that they have a massive theme and plugin ecosystem. So themes are essentially skins that you put on top of WordPress, and it can completely change the look and feel of your site. And there are roughly 10,000 WordPress themes out there, and that means that you've 10,000 options to change your site. For some companies like Wix, they maybe have a couple of hundred, so there's just much more options for WordPress. Similarly, they have what's called a plugin ecosystem, and this allows you to add additional functionality to your site. There's over 50,000 plugins, and these are just little pieces of functionality that you can add to your site very, very easily. You just install them, and essentially you can automatically add that functionality in. And so it's great to have so many options to add this all in, which you wouldn't have with another website builder like Wix or Weebly, etc. They're just not capable of creating all of this extra software, because all of this extra software is created by independent companies. And that's the beauty of really that open source aspect of WordPress.
So to sum up then, why use WordPress over some other website builders? Well, number one, 29% of the internet uses it, so you're building skills that are much more valuable in the marketplace. Two, it's open source, which means you're always protected in terms of a company shutting down or price changes. And number three, then there is a huge theme and plugin ecosystem which really allows you to change the look and functionality of your site very, very easily. Now, the first two steps to set up your very own website is firstly to get web hosting and then to register your domain name. Now, web hosting will really allow you to store your website online so that people can access it all over the world. And your domain name will be, for example, your companyname.com, and that's your web address so people really know where to access your site. So there are plenty of places where you can complete these two steps, but I would recommend bluehost.com. They are the company that I use personally. They've never let me down. And also, I've organized a pretty cool discount for you guys if you want to check it out. The link is in the description. You get a free domain, which will save you about $15. And then you can also get a 60% discount on your web hosting. So in the first year, you'll probably have saved $75 if you click the link in the description. But you can feel free to use any web host you want. The steps that I'm going to walk through in this video are pretty much going to be exactly the same. So either click on the link and you're going to come to a page like this, and then you can click Get Started Now. And then we need to select our web hosting plan. And there are a couple of options here, but I think for most people, you're just going to select the basic plan. That's $2.95 per month with the discount. And that means you can host one website online. Now, the only other option you might be considering is the Plus plan. So for a little bit more, you can have unlimited websites and host them. And why would you want to do that? Well, maybe if you're thinking of setting up a couple of websites, or maybe even you're creating websites and managing them for people, then this is a very affordable plan to select. But I think for most people, you're just going to want to be selecting the basic plan. And I do want to explain a little bit further now, why do you even need web hosting in the first place? If you've never set up a website, it's a bit of an alien concept because we just post stuff to Facebook, YouTube for free. And actually, those companies absorb that hosting cost themselves. They have to pay for data centers with servers on them. And so, unfortunately, they won't pay for it when it's our own site, and that's why we have to pay for it. Essentially, we're buying here a little bit of space on a server in a database somewhere, and that's why we pay when we set up our own website, and we never pay when we upload to YouTube, etc., because they really cover the cost. So, I think people find that explanation helpful, and so now that you understand why you need hosting, I think, and you know the plan to select, let's go ahead and select this basic plan here. Now, here comes the exciting part. We need to get our free domain. And so what you really want to do is think about your business name and type it in here. So, in terms of picking a domain name, I would try and keep it as short as possible, less than 20 characters. You want it to be something that rolls off the tongue easily. So if you said it in conversation, they would remember that that was your web address. And it's more important to have a domain name that is brandable and memorable rather than a domain name that has loads of your keywords in them, because actually having keywords in your domain name is not going to really help you rank in the search engines. It might give a clue about what your business is about, so try and include them if you can, but don't have like 10 keywords stuck together. People are never going to remember that. They're never going to type that in, so you want to keep it as short as possible. So if you're creating a new domain, you can type it in here, or you also have this option if you've bought a domain previously to go ahead and sign up. So I'm going to just put in WP, so WordPress setup demo. And then we get to select our domain ending. You can see now it's on .co.uk. And I would try and get the .com
if you can, if it's available. That's what people remember the most. It seems like the most trustworthy. They don't have to think about what's the domain ending. But there are other options out there. You can see them here. .org is very popular for charities. .co is becoming more popular as well for startups and new companies. But for now, I'm just going to buy the .com and then click next. So now we need to go and fill out our account information. So I'm just going to take a couple of moments to fill this all out. So once you've filled out your account information, then you just want to review your package information. And you can see by default here, there will probably be a couple of options selected by default. So I'll just explain what each of these options are, and then you can decide whether you want to leave them enabled or not. So the first one is domain privacy protection. So what is this about? Well, the reason you might want to keep this is because there is a site called whois.com, and I'll just put it in an example site here, growthstars.com, and on this site, people can find out the phone number and the email that you would have put in when you registered your domain name. Now, a lot of people don't want that information public. You might get a couple of random emails or maybe even a phone call. So some people select this domain privacy protection option so they don't get that. Now personally, I don't mind if I get a random email, so I can save myself really $1 just by doing that. Now Site Backup Pro, this is an option maybe you should leave enabled. Essentially what this will do will back up your site, especially if you have a big site with a lot of content on it. You may be changing content, you may be editing the code, something like that, something breaks, and you need to get your backup version so that you can get your site back up and running. For this demo site that I'm setting up, I'm not going to select that, but I think that is a good option for a lot of people. Now, site security, again, there's more information there. I'm going to show you a couple things to do to secure your site, so you don't need that option. Then, once you're ready, all you need to do is type in your payment information, which I'm going to take a minute to do now. Okay, I've typed in my payment information there, and then you just want to select I've read the terms and agreements and click submit. Okay, so great, our purchase was successful and a confirmation has been sent to our email address. And before we can log in, as it says here, we need to create a password. Next step then is just to go ahead and insert a secure password, and it'll give you an indication of how strong that is. So I would recommend you try and make that strong so your site stays secure. And then you can just say I've read the terms and agreements and click next. So they'll give us the option here to pick a theme. What I will actually do is just skip this step. Okay, we're all done. Now I am getting a notification here that they will update my domain automatically as soon as it's ready, so that's good to know. You might see a similar notification, and then we can just go ahead and click Start Building. So here we are now in the back end of our brand new website, and if you want to take a look at what it looks like, just come up to Welcome, come up to Visit Site, and we can see that this is what our site is really looking like now. It's pretty basic so far, not a lot of content on it, but we're going to be making this really look incredible and adding content to it. But that really wraps up the first steps to setting up your site, registering the domain name, getting hosting, and installing WordPress. Now that you've set up your WordPress website and you are logged into the backend, I want to bring you on a tour of the WordPress dashboard so you can really understand how easy it is to change the look and feel of your site. So the first thing that I want to explain to you is if you come down to Appearance and then Themes, is really the most radical way that you can change the look and feel of your site, and that is to change the theme. So we can see right now that we have the 2017 theme installed on our site. It's active. Now this theme comes free with all WordPress sites in 2017, and also you can see the previous versions here as well, which you can activate if you want. Also, you can add themes that you find online, and I'm also going to show you how to install a premium corporate theme in a little bit as well. But the key message that I want to say is that if this is not the type of site that you want, do not worry about it at all.
you can install a theme that transforms this into a fully functioning e-commerce site. You can change this to a corporate website or whatever. WordPress is definitely not just for blogs, and just by changing the theme is really a radical way that you can change the look and feel of your site. But before we get into that, I just want to walk through some of the more basic steps that you can easily change right away and play around with. So, well, let's come up to our posts and have a look at all of our posts here. We can see that we have just one post or blog post on our site. It's called Hello World, and this will come as default as well, so we can see it here. That's the title, and this is the content of the post. So if we want to change that, we can come into Edit. And what we can do now is to edit the title of this post. So let's just change this to first post. And if you were typing a blog post, this is where the title of your blog post would go. And we can just say, this is my first post. This is my first post, yay. And what we can also do is change the URL of this post as well. So what we can put in here is first-post. So let's update this and see how it changes on our site. So there we go, we've changed the title and the post, and even if we click into this, we should be able to see the URL that has changed as well. Now what you might be seeing in this URL is the date, and it is possible to remove that, so it's just ourwebsite.com/ whatever we've put in there. And so to do that, I would highly recommend you do this, just even for the search engines. So come down to settings, permalinks, and then we can set the URL as the post name. Then we can go ahead and click Save Changes. And now let us come back to our post to make sure that that is changed. So if we edit it again, just open that up, we can see that that has been changed. And if we go to we'll have to change the URL here. And we can see that that's coming up, and that is showing much more cleaner and neater. And that's actually much more search engine friendly. So I would really recommend that you come in to your settings and change those permalink settings to the post name. So there we've edited a post. Now, what about if we wanted to add a post? Well, again, we just come to the sidebar, click on Add New, and we can just type in second post. We just wanted to see the content again. And you can see that now, because we've changed the permalink settings, that it's just showing up as / our keyword or our title. So I'm going to go ahead and publish that. And if we come into our site preview, we can see that it's showing up here now in the recent posts. And even if we just come back to our home page, we should be able to see the second post and the first post. So there you go. That is how you add a post to your site. And already that's how we're starting to build up the content. Now you're going to learn how to add pages to your WordPress website. So come back into the dashboard once again. You want to come to pages this time. And then let's firstly have a look at all the pages on our site. So right now we can see that we just have one sample page. And again, we can click into edit this. And if we want to really preview the page, we can just open it up as well. So here we can see it's just a sample page. It's the title of the page. And it looks like kind of an About Us section. So what we can do is change this page name again to About Us. We can also change some of the text here as well. So I'll just delete some of that just to show you the difference. Or maybe let's just keep it as this part here. And we can edit out this text as well. And we can just make sure as well that this changes to About Us. Now what we can go ahead and do is update the page. And let us preview the changes as well so we can really see it there. So it's changed to About Us, and we can see the text there that you either inputted yourself or that I just left in there. So if we come back to our just normal page though,
we can't actually see this About Us page. It's kind of hidden away somewhere. So what we want to do is insert a menu up here at the top so we can really see the pages of our site across the top. And before we do that, we might end up adding one more page. So let's just put in services. Our services. And again, what we can do is preview it just to see how it looks like. And there's nothing there now, but essentially we've created another page and we can just go ahead and publish it. Now, as we said, we can't see those pages from our home page, so how do we get those visible to our visitors? Well, what we can do is come down to Appearance and then Menus. And what we want to do is go ahead and create a menu. And we can call this Main Menu and then create it. Now what we want to do is add our pages to our menu. And then we can go ahead and click Display Location Top Menu and save the menu. And then if we open up our site and refresh the page, we can see these menu items appearing up here. And if we click through, we can come and see our About Us page or our Services page. Now if you want to adjust how those appear, if you want to put the About Us page first, then you simply just rearrange the order, click Save, and click Refresh just to see those changes. Now what we might do actually is want to put in a menu item for our homepage or our blog as well. So what we can do is come across to our menu, click View All, click Home, click Add to Menu, and then we can see that that's been added, click Save, and click Refresh. And now we can see the home page, which we can get back to quickly from any page on the site. So what about these links in the sidebar here? How could we change the appearance of this or the order of these? Well, what we want to do is come into our dashboard once again. This time come down to Widgets. And in here we can see the blog sidebar, and we can add widgets in, just to drag and drop them in. If we wanted to see a calendar, we could add that in. We could just give it a title. Calendar, click Save. If we refresh our site, we can see the calendar appears up here. So you can add in different things like a list of categories for your blog post, custom HTML, which you maybe might use to put in a sign-up form for an email. You can put in images, recent comments, different things like that, videos, etc. Now what if you want to change the order? Well, you simply just rearrange them here. So if we come back in, we can see the search bars at the top. And if you want to delete any of these widgets, you can just go ahead and delete it very easily, and it will instantly update. Now there's one more important thing that you might want to change, and that is up here, and you can see it says welcome, just another WordPress site. So we do want to change that, and to do that we can come to Appearance once again, come to Customize, and in here you can come into Site Identity. And so what I'll put in here is the name of the site, WP setupdemo.com, and then I can say learn how to set up a WordPress site, and then I can just click Save and Publish. And if I come to my site once again, refresh the page, you can see this change. Now that we've made all those changes, one thing you might want to do and just make sure is that your site is live. So if we come up to Bluehost right at the top here, you may see this here that you can launch your site. Your site is currently displaying a coming soon page. So I'm going to go ahead and click Launch the Site. And once again, we can go and view the site here. So already you've learned how to change the tagline on your site, add menus, add posts, add pages, change the widgets. As you can see, it's very simple to work with WordPress, even if you're non-technical like me. If you want to take the look and feel of your WordPress website to the next level, then something you should seriously consider are premium themes. Now, if we come down into our site, we can see underneath our themes here, the theme that we're using right now, which is the 2017 theme. It is the free theme that comes when you download
WordPress. And I think it looks pretty good, and it's definitely all you need to have a fully functioning website. But if you do want to take it to the next level, then definitely consider getting a premium theme. Now, there are lots of places where you can get premium WordPress themes, but really the shop that I would recommend is mythemeshop.com. And you can see they have over almost 400,000 happy customers. I use them exclusively because they have great themes, but particularly because their support is incredible. And that's really important for non-technical people. You can see some of the questions that I've asked here, just things I didn't really know how to do or couldn't figure out. And they really helped me, and they always got back within 24 hours. And that is really necessary if you're not that technical. It's really, really helpful. And it's definitely not something that every theme shop offers. So that's why I would recommend these guys. Now, in terms of the themes, there are loads of options. And they have over 100 different themes here. And they're all broken down by categories, so you can come in and have a look at these if you want. For example, they have really good e-commerce themes as well. So you can see this one. You can essentially get this site by just downloading this theme. And you can see that something like this looks extremely professional. It's a lot different to this. And instead of you coding it or hiring a developer, you can just buy this theme and have all of that functionality, look and feel built in. So instead of spending hundreds or thousands on a developer to get the site you want, you can just buy one of these themes for less than $50. Now, I do know there is a price tag on these, and you might be thinking, is it worth it? But I can guarantee you this is a tiny investment that you could make to really make your site look professional, and I think you would earn the money back pretty much straight away. So a couple of themes that I like, I'd recommend that one for e-commerce. If you're just looking for an upgrade on the blog, one theme that I've used in the past is the Schema theme. It looks great. And when you click into all of these themes as well, you can get a full demo of them to really get a sense of, what they look like before you go ahead and purchase these. If we click in here, and all of these come with a 30-day money-back guarantee as well, so you can always just try them out. If you're not happy, return them. So Schema theme, really fast, really SEO friendly as well. That's why I've used it in the past. And another one that I would recommend, and that I'm actually going to use for this example, is the corporate theme. Here we go. And I think this is a perfect theme if you are setting up a company website. You can see it looks great. Meet our team, services, our work, our portfolio, different experience that we have, plans and pricing, etc. So it looks extremely professional, and it also has a blog and everything, so you can do your content marketing. So even if you're building websites for people, I recommend buy the theme. Then you can deliver a very professional looking website in a very quick time frame. So I'm going to go ahead and get this theme. Even if you want to get a different theme, the process is going to be the same for installing it. So let's just go ahead to the checkout and get this one. So I'm going to proceed to payment. I'm going to pay with debit card. I'm going to pop in my details here and then click I'm ready to download. So now what we need to do is just go ahead and check our email to get the download instructions. So log into your email. Come to your folder and get your download link. So just click on the link and then click on download instructions. We want to click on download theme files, and then we're going to follow these steps here. So we'll just download this zip file. Then what we want to do is go to Appearance Themes Uploads. So if we come back in to our dashboard, then we come to Appearance, Themes, and then add the new theme. And then we can come to Upload Theme, choose the file, and choose the theme. अपनी दुनिया को बनाओ ट्राइएक्टिव से। नया ट्राइएक्टिव जो कोविड-19 वायरस पर असर दिखाए 1 मिनट में और सरफेस को डिसइंफेक्ट, सैनिटाइज और फ्रेशन करे। मतलब ट्राइएक्टिव से। ट्राइएक्टिव।
Then we can just click install now. And then what we can do is activate the theme. Now once you can see the theme is active, what you might want to do is just come up and visit the site to see any of the changes. And what we can see here is that not a lot is happening. This is not really what we wanted to get. But don't worry, all you need to do is just one further step. Come down into theme options. And then down in the end, you're going to see the import export option. And this will be the same steps no matter what My Theme Shop theme that you buy. And you can see here that you have three options: import the theme options, import theme options and widgets, import theme options, widget and content. So you want to select this option here if you want your site to appear exactly like it appears in the demo. And if you want a reminder of what that looks like, just click that open. And you can see that if you want your site to look exactly like this with all this demo content and all the pages and menus laid out exactly the same, then you can just go ahead and select that option, which I'm going to do, to import the theme options, widget and content. And just click OK. Could take a couple of minutes for all of this to load up. And once that's done, we can just click OK, and then we can come again now and visit our site to see the changes. So now we can see that the theme and all of the sample content has been loaded up on our domain. And I think it really looks fantastic. Now obviously this is only going to be sample content in here, so we're going to want to customize this and update it for ourselves, but it's very simple. It's just drag and drop, it's click, it's just copy and paste. But I think it looks really, really good. And also, say if we come across to our blog, we can change the posts, we can unpublish posts, etc. We can change the widgets, we can change the pages. So to do that, we can come back into our site. And there is an additional tab here now under our appearance theme for our My Theme Shop theme called Theme Options. And this just makes it really easy again to change your theme that you've downloaded. So if we come to General Settings, for example, and I'll come back to the home page, we can change this logo and this favicon, these small images here, just by uploading them. Very simple to do. If we come down to our home page here, we can see that we can change the home page layout. So if we want to put theme above features on our home page, we can just drag and drop that and move that around. No coding required. If we want to come to our intro and change the text and image on our home page and where that links to, we can change all of this information here in this section. And we can change the button, we can change what it says, we can change where it links to, etc. So very easy to send it to, say, your services page rather than your portfolio. We'll keep on moving down, just have a look at a couple of other things. Meet our team. So right now you can see that they have kind of sample text here. And you obviously want to update that for your own theme or your own team. And you can just click in, change the photos, change the links, change the descriptions, etc. So very simple, it's just drag and drop. It will take a little bit of time to update the site with your own content, but it's very simple to do. And let us come and have a look at pages as well. If you want to, say, remove some of those pages that come with the theme and the sample content, you can do that easily. You can just select the page, you can edit it, you can move it to trash. You can do it in the same way. If we come back out, we can actually select a bunch of pages at once, select a bulk action like move it to trash or edit it. And what is often a good idea is you don't maybe want to move it to trash. So what you can always do is edit the page, or we can actually do a quick edit and we can unpublish the page, move it to draft. And so that will be there if we want to reinstate it later. But it won't appear on our site, so we can move any pages to draft that we don't want. Similarly, if we look at posts, if we come across to our blog, we can see that there are quite a few posts here with a lot of sample content. So what I would recommend you maybe do is just, you can move those to draft, you can update that, and for example, they will be removed from the blog, but you can use those templates for later, and you can do that for multiple ones as well.
Now in the sidebar of our blog as well, we can see we've got some widgets, we might have sponsors, we might have this image, etc. So once again, very simple, just come down into appearance widgets, and we can just change these around. Now the cool thing about this theme is that it comes with different widgets as well, so we can see that we have a link to all our social profiles. Now if we don't have all these social profiles, what we can do is just remove the sample links here. So I'll just, for example, take out Facebook. We can see Facebook here. And what we can do, if I save that, take out the link, you can see that's removed. Now you will want to put in the links to all of your own profiles here. If you want to delete that completely, you can just delete that. That will disappear. And if you want to reinstate it, what you can do is come down here. We should see social profile icons. And we'll just need to put in maybe a little hash or our own links in here. So let's say I Pinterest, Instagram, LinkedIn, Twitter. It's probably all YouTube that I'm going to have. Click save. And they're all going to come up there. So you can see it's very easy to customize your theme with your own content once you have downloaded it. Now one final thing you might want to do is change your theme at some stage, or upload a different theme or activate a different theme. So to do that, come back to appearance themes, and you can see if you did want to reinstate the theme that you had previously, you can firstly get a live preview of it, and just to see what that looks like. And really to see the difference now between this free theme and this paid theme that we have spent small amounts of money on. I think this one looks way more professional. Hopefully this has opened your eyes to the value of premium themes. And so if you want to go get one for yourself, I would recommend My Theme Shop. The process is the same, just download it and then upload that file into the theme and activate the theme. Now that your site is set up, let us briefly talk about WordPress security and also how to install WordPress plugins which add additional functionality to your site. So firstly, in terms of keeping your site secure, one of the best things that you can do is just come into updates here in the sidebar and just make sure that you have the latest version of WordPress. WordPress are constantly updating the software just to prevent against any hackers or spam. So the best way to stay protected is just to check that you have the latest version of WordPress. And you can just check that here. Or if you see a little notification to install it, you can just click the button and go ahead and install it. Now there are other things that you can do to protect your site, and one is to install some plugins with additional security feature. So if we come down to the plugins section here, plugins really allow us to add additional functionality to our site, and it's one of the key benefits of setting up a website with WordPress, because you can really add so much extra functionality very easy. In fact, if we come to the WordPress.org site, we can see under plugins here that there are about 50,000 extra plugins which we can easily just add into our site. We can see how many people use them, etc. Now I want to show you a plugin that you can use to add a little bit of extra security to your site. But before we do that, we can actually go ahead and delete some of these plugins that are pre-installed on our WordPress site. Now, plugins do take up a little bit of space on your site, so if you're not using them, it's probably recommended that you delete them. So for example, we can see that this Jetpack and Hello Dolly are by default installed on our site. And what we can do is actually firstly deactivate any plugin that we don't want first. And then what we can go ahead and do is select them and delete them. So this is the process. No matter what plugin you are using, you can install them, delete them, test them out, and it's very easy to add them in. Now, in order to find new plugins, you can just click on Add New, and then you can come up to the search bar here if you want. You can also see some plugins are featured here, and there's also some of the most popular ones here as well, which you can come in
and you can have a look at really what they actually do, and if you think that's applicable to you, you can just go ahead and install them very easily. Now I'm going to show you how to install a plugin, and this is one that will just help a little bit with security. So it's called Login Lockdown, and it should pop right up. And what we can do is go ahead and just install this. Essentially what this will do is limit the number of login attempts from a given IP range within a certain period. So say if somebody was trying to hack your site, they're just putting a script on to try a load of different passwords. Well, this little plugin will lock them out of the site for an hour so that they can't hack in. So all you need to do is click install. And then we can see it's been installed. If we come to our list of installed plugins, we can see that it is here. We need to activate it. And that's all we really need to do to add that extra security in. Now what you can do also is adjust those settings if you want. So if you come to settings, login lockdown, we can see that the number of failed attempts before they retry, we can change that if we want, how long they're locked out of. You can adjust those settings easily for this plugin and for any plugin in the very same way once you download them. I'm just going to leave it as it is. It's a simple plugin and no need to adjust the settings. So that is how you add some additional security to your site. Remember just to make sure you're always updating to the latest version of WordPress. You can add in a plugin like Login Lockdown, and you can also add any other plugin to your WordPress website in the very same way. Congratulations on completing this. सो गाइज हम लोगों ने यहाँ तक जो डिस्कस किया, बेसिकली मैंने जो वीडियो बताया उसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग एक पेड यहाँ से कहीं पे पेड सीरीज़ नहीं लेने वाले वर्डप्रेस का. हम लोग ट्राई करेंगे सर्टेन थिंग्स विच आर अवेलेबल. आप ट्राई करेंगे तो आप पेड सीरीज़ नहीं लेने वाले. सो अगर हम लोग पेड सीरीज़ अगर लेते हैं, आई मीन अगर वर्डप्रेस का हम लोग अगर प्रीमियम सर्विस अगर लेते हैं तो क्या क्या फंक्शनलिटीज़ आपको मिल सकता है वो वहाँ पे दिया है. इट डजेंट मीन्स कि हम लोग कोई वर्डप्रेस एडवर्टाइज कर रहे हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. इसके लिए हम लोगों ने देखा, और मेन रीज़न ये है, मेन पर्पज़ ये है कि हम लोग जब बहुत बार वेबसाइट आपको रिक्वायर्ड रहता है, बहुत क्विकली रिक्वायर्ड रहता है, और आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आप टाइम इन्वेस्ट भी करते हैं तो प्रोफेशनल वेबसाइट बनने में टाइम लगेगा. ट्रायल एरर करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा, वापस एरर्स आएंगे, वापस चेंजेस करना पड़ेगा, सर्टन थिंग्स आपको नहीं पता है वो वापस आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. तो अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है जो आईटी से नहीं है, या आप आईटी से है फिर भी अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे कोई वेबसाइट्स बनाने का, स्टिल आप एक बहुत प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकते हैं फ्रॉम हियर. सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम लोग यहाँ पे ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे फोकस करते हैं. वर्डप्रेस CMS बोलते हैं उसको, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. मतलब आपको एक रेडी चीज़ है. मेनली स्टार्टिंग में वर्डप्रेस ब्लॉग्स के लिए ही यूज़ होता था ज़्यादा. धीरे धीरे उन्होंने चेंज करके अपडेट करके उसको बाकी नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. वर्डप्रेस हम लोग बड़े प्रोफेशनल वेबसाइट्स के लिए यूज़ नहीं करते बिकॉज बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ उसमें रेडी होते हैं. एंड जब इतने सारे फंक्शनलिटीज़ आपको रेडी मिलते हैं ना, तो वो बहुत बार आपके जो साइट्स है उसको स्लो डाउन कर देते हैं. तो अगर मेरा एक बहुत बड़ा साइट है जिसके अंदर बहुत सारे कंटेंट अगर डालने हैं, और ऑलरेडी इतना सारा वर्डप्रेस का खुद का कोडिंग है, खुद के उनके इतने सारे फंक्शनलिटीज़ है, तो वो टाइम पे मैं जितना बड़ा वेबसाइट बनाते जाऊँगा यूजिंग वर्डप्रेस, उतना मेरा वेबसाइट जो है वो स्लो होते जाएगा. तो उसको थोड़ा सा प्रॉपर फास्ट रखने के लिए अगर आपका वेबसाइट अगर बड़ा है तो वो टाइम पे हम लोग वर्डप्रेस यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अपना खुद का वेबसाइट बनाएंगे. हाँ, लेकिन आपको अगर एक प्रॉपर वेबसाइट चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, तो वो टाइम पे वी कैन गो फॉर वर्डप्रेस. वी कैन टेक वन एग्जाम्पल. अगर फेसबुक, ट्विटर ऐसे कोई साइट्स जो है वो वर्डप्रेस यूज़ नहीं करेंगे, वो अपना खुद का साइट डेवलप करेंगे, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्डप्रेस के थ्रू अगर वो करेंगे तो उनका साइट जो सेकेंड्स में ओपन होता है ना, इट विल टेक 15, 20, 30 सेकेंड्स. उनका लोडिंग टाइम ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इसके लिए वो वहाँ पे
वर्डप्रेस यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हम लोग का कॉलेज का वेबसाइट है, जहाँ जब तक हम लोग उसके ऊपर सैप इंक्लूड नहीं करते तब तक हम लोग वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सैप इंक्लूड करते हैं, स्टूडेंट्स लॉगिन करेंगे, वो अपना अटेंडेंस चेक करेंगे, वो असाइनमेंट्स वहाँ पे देख सकते हैं, रिजल्ट्स देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस अपना देख सकते हैं। सो ये बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो टाइम पे अगर ये सब कुछ अगर मैं वर्डप्रेस के थ्रू करूँगा ना, तो वर्डप्रेस बहुत स्लो परफॉर्मेंस देगा मुझे। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का वेबसाइट बनाएंगे। सो दिस आर द 2 रीजन्स। आपको एक अच्छा सा वेबसाइट चाहिए अपने ऑफिस, कंपनी या किसी के लिए, जिसके ऊपर बर्डन ज़्यादा नहीं आना है, आपके पास इनफ फंक्शनलिटीज़ आपको ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं करना है, तो वो टाइम पे वर्डप्रेस इज़ परफेक्ट एंड फाइन। लेकिन आपका साइट जितना हैवी होते जाएगा, जितने फंक्शनलिटीज़ हम लोग उस पर बढ़ाते जाएंगे, उतना आपका जो साइट है वर्डप्रेस का रिस्पॉन्स उतना स्लो होते जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ प्योरली अप टू अस, आर चॉइस कि आप कौन सा फंक्शनलिटीज़ अप्लाई करेंगे उस पर। ओके, सो आज हम लोगों ने बेसिक समझा है वर्डप्रेस का, दैट इज़ स्टार्टिंग ऑफ आर यूनिट 5। इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, और सैटरडे आपका अगेन वेबसाइट सबमिशन होगा, और उसके बाद फिर हम लोग यूनिट 5 बहुत छोटा सा है जिसका हम लोग सर्टन चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज आज का लेक्चर यहाँ तक ही है।